Till now we have covered the first unit completely, where we have studied all about the same wastewater reuse and engineering regarding the characteristics, how to get the sewers and all, and everything. Then we have started the second unit, and in second unit we have studied the outline of what of the entire sewage treatment project, or you can say entire sewage treatment process which takes place. So now we'll be considering one by one all of the components of the sewage treatment. So we'll start in that regard. Yes, I hope the screen is visible to all of you. Hello, hello, am I audible? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as we have discussed that the sewage treatment, this entire process takes place in three stages, that is primary, secondary and tertiary. And what we have studied up till now is that uh, the broad, what do you say, the brief classification and the brief study of all the components which are used in this. For example, in primary, process, you'll be making use of the screening, devices and the grid separating devices and the primary sedimentation tank. Okay, then there was one more thing which we have studied in this, one important thing, that every treatment process, primary, secondary and tertiary, all of the stages will release some amount of at some places there will be enormous amount, also some amount of sludge will be generated, and this sludge is the only thing that you have to deal with. Okay, this sludge will create nuisance for you, therefore you have to deal with this sludge. So how do we deal with sludge? By decomposing or digesting that particular sludge. And how do we digest that sludge? By making it go through various processes which comes under the sludge digestion process. Okay, and there was one more thing, this short circuiting, जो हम लोग क्यों करते हैं? Because we have to alter the rate of decomposition over here. So artificially we do what? We feed the bacteria, or we increase the colonization of the microorganisms by feeding the this thing. This particular thing is known as charge. Feeding of charge is done. Okay, so this charge is fed into the primary sedimentation tank itself. उससे पहले ही कर देते हैं, इनफैक्ट फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर में ही फीड कर देते हैं. क्यों? Why we feed it into the flow equalization chamber and why not primary sedimentation tank? Any answer? Yes, my question is, listen to it again. Why do we feed this microorganisms in the flow equalization chamber and not the primary sedimentation tank? Yes, Nikhil Kirar. Any answer? Am I audible to you all? Yes, sir. Okay, so before I start marking absent, I guess you should start answering. The only thing I can hear is sir. See, you are 20 participants right now. Out of 20 students, nobody can answer this particular thing. Sir, what was the question? The question was that while we feed the charge into the flow equalization chamber, why don't we feed the charge into primary sedimentation tank? Now you will ask, what is charge? Okay, so the basic we have discussed this thing earlier. From the sludge digestion tank, what we do is we take a partial amount of sludge, and a certain proportion of sludge is again fed into the primary this thing process, that is flow equalization chamber. सो माय क्वेश्चन इज दैट पर्टिकुलर स्लज ये हम लोग फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर में क्यों डाल रहे हैं? ये हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डायरेक्ट क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते? Sir, to increase the bacteria count. बैक्टीरिया काउंट तो यहाँ भी हो सकता है, टैंक पीएसटी में भी हो सकता है. बैक्टीरिया काउंट तो ग्रेट चैम्बर्स में भी हो सकता था.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी स्लज कैरी कर रहे हैं. सर टर्बुलेंस कम करने के लिए बताया था शायद आपने. टर्बुलेंस कम तुम्हारा फ्लो इक्वलाइजेशन, वो काम फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर का है. सी आई विल टेल यू why we add this charge into flow equalization chamber and why not PST or any other process. इसका आंसर ये है कि जो सबसे स्टेबलाइज्ड फ्लो तुम्हें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर. इसका नाम ही फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम फ्लो को इक्वलाइज कराते हो. दैट मीन्स तुम फ्लो को रिड्यूस करते हो. यू आर रिड्यूसिंग ऑल द टर्बुलेंस इन द वाटर सो दैट द पार्टिकल्स में सेटल डाउन. ठीक है, सो दैट यू मे प्रिपेयर द फ्लो ऑफ वाटर फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टाइम. ठीक. So what are this less turbulence condition? ये क्या है? This is the most favorable condition for growth of any microorganism. ठीक है. Whenever we talk about growth of microorganisms in water or any biological process going in the water, ठीक. रनिंग वाटर में तुमने देखा होगा डिकम्पोजिशन. कभी तुमने देखा है कि सीवर्स में रनिंग वाटर में डिकम्पोजिशन हो रहा है? नहीं. लेकिन द मोमेंट होगा, लेकिन द रेट विल बी वेरी लो. But at the same time, अगर तुमने देखा होगा कि if the sewage water is collected somewhere, look at the rate of decomposition over there. There's a rapid rate of decomposition. एक दिन बाद ही पानी स्मेल करने लग जाएगा. 2 दिन बाद वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे साइड में उस पॉन्ड के. ठीक है. Why this happens? This happens because that less turbulence condition, or you can say the stabilized water, stagnated water, that is providing the ideal conditions for growth of microorganisms. ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है. खाना तुम्हारे पास है ही है. रहने के लिए तुम्हें जगह चाहिए. रहने के लिए जगह चलते चलते थोड़ी ना तुम बाकी प्रोसेस कैरी आउट करोगे. Isn't it? Yeah, yes. See, for you people also, human beings also, they grow. When they grow, during their entire life, they don't keep on moving. They'll be staying at some place, they'll be halting at some place, they'll be eating. चलते चलते तो नहीं खा लोगे तुम, हमेशा रुक के ही खाते हो. So same is with the microorganisms Yeah. also. Okay, so that is the reason this question is asked most of the times. In interviews and all, this is asked that why don't we feed that charge somewhere else, and why only the flow equalization chamber? So why? The answer is that the less turbulence condition, that equalized flow which we are providing over there, that is the most ideal condition for the growth of microorganisms. And our motive is to increase the colonization of microorganisms. Okay. Yeah. So this is all the this thing write up of the process which we have discussed till now. एक यही जो हमने process discuss किया है, क्या? This outline process. What? Let's quickly revise it. Raw sewage will pass through the screens, chambers, and immerserators, and it will go to the grit chambers. Then from there, फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर में फ्लो इक्वलाइज करा दिया. फिर उसके बाद क्या? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंटेशन कराया. सेडिमेंटेशन कराया तो क्या हुआ? सम दिस थिंग लिक्विड प्राइमरी स्लज विल बी जनरेटेड. उस प्राइमरी स्लज को हमने सीधा भेज दिया कहाँ? स्लज थिकनर में. और बाकी का जो तुम्हारा वेस्ट वाटर बचा वो फर्दर प्रोसेस ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया. देन देर आर सर्टेन प्रोसेस विच आर कैरिड आउट इन सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. फिर वहाँ से भी सेम चीज़, जो बायोलॉजिकल स्लज निकला सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी बायोलॉजिकल स्लज. तो वट एवर बायोलॉजिकल स्लज इज रिलीज, दैट विल बी अगेन फेड इन टू द स्लज थिकनर. और जो बाकी बचा, that is the remaining wastewater, it will further be carried to the tertiary treatment plant, or you can say chemical treatment plant. Okay, so this secondary, always remember this thing, this secondary treatment process in wastewater treatment is always what? Is always biological treatment. Okay, and when we talk about the tertiary chemical treatment, it is always what? It is always the chemical treatment. Okay. So this is there. Yes. Okay, then the sludge which is generated, that will be fed into the sludge thickener. So why in the sludge thickener? Because this semi liquid sludge, that the viscosity at which it is generated or removed from the all the process, at that viscosity you cannot carry out the further process, so it has to be thickened, that is diluted. Okay, then from there it is
what it is carried into the sludge digestion tank. Okay, from there again what happens, a certain partial amount of supernatant liquid is fed into the short circuited and fed into the flow equalization chamber, and बाकी का जो बचा तुम्हारा, जो फाइनली स्लज मिला तुम्हें सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, दैट विल बी सेंट टू द स्लज ड्राइंग बेड्स, जहाँ पे उसको ड्राई कर दिया जाएगा, ठीक है. So this is how the entire treatment process works. Okay. Now the biological, see the very first process, that was primary process. तो इसमें normal sedimentation, primary sedimentation ही करते हैं. इसके अलावा the only thing that is done in primary treatment process is what, the screening and the sedimentation. ठीक, primary sedimentation, जिसमें हम लोग जितने भी लार्ज और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं तो वो रिमूव कर देते हैं. सो दिस ग्रिट चैम्बर्स एंड ऑल, इट रिमूव्स व्हाट, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. So in primary process we deal about with the suspended impurity. Then comes the biological treatment process. So this biological treatment process basically removes the organic matter present in the sewage. How it removes this organic matter? By inducing the biological activity in it. Okay, कैसे? वही जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, या फिर जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है. बायोलॉजिकल, सबसे पहले ये कंसिडर करो कि पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है. नाउ यू पीपल विल आंसर. ओके, आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू. जो सीवेज में पोल्यूटेंट्स हैं वो मेजरली क्या पोल्यूटेंट्स हैं? व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स? Oil, I'm grease, talking about yeah, broad classification. So what are all these? chemical waste. अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ठीक है. ये तो तुम बता रहे हो, यू आर स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट. कैटेगराइजेशन अगर करोगे तो किस तरह का वेस्ट होता है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, दो तरीके का वेस्ट है. इज इट? वही तो मैंने बोला सर, ऑर्गेनिक. आई वाजंट एबल टू हियर यू. सर ओके, तो इनऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो तो Sorry, तुमने रिमूव करा दी. जो डिसॉल्व फॉर्म में, उनको तुम बायोलॉजिकल प्रोसेस से तुम कुछ कर नहीं सकते उनका, ठीक है, पार्शली कर सकते हो लेकिन नथिंग यू कैन डू. जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो डोमेस्टिक सीवेज में क्या है तुम्हारे? दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. सो पोल्यूटेंट्स में अगर तुम मेजर पोल्यूटेंट की बात करोगे तो व्हाट इज दैट? द ऑर्गेनिक मैटर. ठीक. नाउ हाउ दिस ऑर्गेनिक मैटर विल बी डील? पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? या वेस्ट वाटर जो यू आर टर्मिंग द कॉइनिंग द टर्म दैट वेस्ट, द वाटर इज वेस्ट. सो व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स में मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है? ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर तुम हटा कैसे सकते हो? ऑर्गेनिक मैटर किसका खाना है? Microorganisms. Yes, organic matter is the food for microorganisms. So basically, these microorganisms will do what? They will eat up all the organic matter. Now, what is your role in this? What is your role? तुम क्या करते हो? तुम उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ा देते हो. कैसे? या तो दो चीज़ें होंगी, या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शुड कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन अ स्पीडी वे. ऐसा कब हो पाएगा? खाना एक लिमिट तक ही खा सकते हो. ऐसा कब हो पाएगा? जब खाने वाले ज़्यादा हो और खाना लिमिटेड. तो हम क्या करेंगे? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने के लिए सोचेंगे. एक तो ये, और दूसरा हमारा मोटिव क्या है कि वी शुड ब्रिंग दिस थिंग, वी शुड एनेबल और वी शुड व्हाट यू कैन से फैसिलिटेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऐसा कितने बार हो रहा होगा कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट बी इन in continuous contact with the organic matter. For example, still standing still water अगर, तो उसमें क्या होगा? मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी, ठीक, तो दे विल बी एक्सपोज टू सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओनली. ठीक. एंड इफ इट इज द डिफरेंट केस, अगर वही पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हैं, ठीक, और देन अ लिटिल टर्बुलेंस इज क्रिएटेड, नॉट टू मच, अ लिटिल टर्बुलेंस इज क्रिएटेड, देन व्हाट विल हैपन? कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ेगा. तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ने से क्या होगा? दे विल बी एक्सपोज टू द फूड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर दैट विल बी एक्सपोज टू more what? More food. I'll show you with biological contactors, उससे ज़्यादा क्लियर होगा.
ठीक है. So this is how the biological treatment is carried out. Then yeah, then this contact, ये जो contact की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, this contact can be, सर yes, yes, what इसमें happened? कुछ एंजाइम्स वगैरह मतलब ऐड होते हैं जो इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह ऐड होते हैं जो कि इस प्रोसेस को और रैपिड कर सकते हैं. यार देखो, एडिशन हम लोग करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सीवेज दैट इज बीइंग ट्रीटेड. ठीक, इफ देयर इज अ हाईली पॉपुलस सिटी, तो उसका सीवेज भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा जनरेट होगा. अब इतने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सीवेज में you cannot every time go for this what do you say, addition of enzymes and all. ठीक, तो दैट इज द रीजन हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन मोस्टली अवॉइड करते हैं. ठीक है, मोस्टली अवॉइड करते हैं, बहुत रेयरली कभी कैरी आउट होता है. ठीक, एंजाइम्स वगैरह अगर ऐड होते हैं तो वो दूसरे काम के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत इफ एडिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीड्स अप द एंटायर प्रोसेस, तो इट कैन बी एडेड, बट Yes, sir. डेली इट कैनॉट बी डन. फॉर एग्जांपल, ओवरलोडिंग कंडीशंस अगर हैं, तो ओवरलोडिंग कंडीशंस के टाइम पे तुम ये यूज़ कर सकते हो. दैट इज केप्ट एज एन इमरजेंसी बैकअप. उस चीज़ को ऐसे समझ लो. ठीक है. सो बैक टू द टॉपिक. ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर के बीच में कॉन्टैक्ट में डेवलप करना है, तो हाउ दिस कैन बी डन, दो तरीके हैं. ठीक है, देर आर टू मैकेनिज्म. फर्स्ट इज दिस वन, बाय सस्पेंडिंग बायोमास इन वेस्ट वाटर. जस्ट अ मिनट. Yeah, first one is by suspending biomass in wastewater, and second one is by passing wastewater over the biomass layer which is attached to the medium. Okay, तो ये जो first one है उसको हम बोलते हैं suspended growth system. First one is known as suspended growth system, and second one is called, the second technique, that is known as attached growth system. ठीक, तो based on these mechanism हमारे पास अलग अलग process है. Okay, so those process makes use of the either of these two mechanism. For example, ASP, that is activated sludge process, it makes use of suspended growth system. ये दो mechanism समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Any doubt in these two mechanism? See, if you will not tell और me, you all are able to hear me, right? yes, sir. Only Rishket is answering. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there are two different methods. Okay, always keep this in mind. There are two mechanism. पहला, या तो हम जो बायोमास है, बायोमास का मतलब क्या? What is biomass? The biomass layer in which the microorganisms will be there. ठीक, तो या तो ये है कि हम बायोमास को इसमें वेस्ट वाटर में सस्पेंडेड कंडीशन में रख दें. ठीक, या फिर दूसरा कि हम वेस्ट वाटर को बायोमास लेयर के ऊपर कंटिन्यूसली मूव कराते जाएं, जिससे कि जो कि तुम्हारा मीडियम से अटैच्ड हो. ठीक, so first one is suspended growth system, second one is attached growth system. A rotating biological contractor, RBCs जिसे हम बोलते हैं, that is a very beautiful example of attached growth system. Okay, so this first degree treatment normally removes what? It removes 60% of suspended impurities and also satisfied 30 to 40% BOD associated with it. And when it comes to secondary treatment, it satisfied 85 to 95% BOD associated with the wastewater. Okay, so see the extent of treatment that we are giving to all these the same wastewater. 85 to 95% of the BOD is satisfied within the secondary treatment only, but still we go for, if required, then still we go for the tertiary treatment, so that the this thing, hazardous nature of the wastewater can be completely eliminated. Okay, yeah. So talking about, now we'll talk about the all the process. So the very first process is screening. Screening is quite similar to the this thing,
द वन विच वी हैव स्टडीड इन वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, जैसा रॉ वाटर के केस में करते थे, स्क्रीनिंग भी सेम इसी में ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं. देर आर कोर्स स्क्रीन, देन देर आर फाइन स्क्रीन. These screens are placed at an angle to create the raking mechanism. Okay. कोर स्क्रीन की विड्थ तुम्हें मालूम है, फाइन स्क्रीन की विड्थ तुम्हें मालूम है. कोर स्क्रीन पहले लगाते हैं, फाइन स्क्रीन बाद में. व्हाई डू वी डू दिस? टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ फाइन स्क्रीन. अगर फाइन स्क्रीन पहले लगा दोगे, यस, तो फाइन स्क्रीन पहले लगा दोगे तो क्लॉगिंग हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट वी पुट अप कोर स्क्रीन जिसमें enormous suspended impurities are filtered out. Then there is fine screen जिसमें large suspended impurities are filtered out. Then there are commutators and mercerators. This is mercerator, MER. The spelling is wrong over here, just correct it. Commutators and mercerators are there. Okay. This commutators and mercerators, these are what? These are units which are employed for breaking down the smaller impurities by cutting and grinding action. ठीक. तो जो कटिंग और ग्राइंडिंग एक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज बच गई फाइन स्क्रीन के बाद भी निकल आई. ठीक. सो व्हाट वी डू इज वी grind these impurities and we cut these impurities, because as compared to raw water, waste water में तुम्हारी जो suspended impurities है वो बहुत ज़्यादा होंगी. ठीक है. तो अगर screens लगा भी दोगे तो it will be happening कि immediately after every 5 minutes it will start clogging. So what we do is we make use of these commutators and mercerators. See, this is a structure where the blades are there. So this entire blades will be rotated and they will be putting up your cutting and grinding action in this particular thing. So commutators use cutting action and mercerators use the grinding action. Both are different things. Okay, always remember this thing. Commutators they exhibit the cutting action and mercerators use grinding action. Then there is flow equalization chamber, which we have already discussed. Why this is employed? This is employed to the to this thing, to overcome the operational troubles. Okay. Why? Because you will be equalizing the flow or you will be reducing the flow so that primary sedimentation tank में तुम्हारा sedimentation easily हो पाए. Then we employ what? The grit chamber, or also known as detritus tank. This grit chamber, these are used to remove the inorganic suspended particles like clay, silt, sand, all these waste products like eggshells and everything. Okay. These all they do what? They will be what? These are suspended particles present in grit chambers, and they are this thing. Just a minute. Yeah. They are uh, settled down. They are made to settle down. Okay. Then primary sedimentation tank. Okay. So this grit chamber is basically what? These are tanks in the form of long narrow channels. Okay. They may be rectangular or parabolic in shape as well. Okay. Then there is design of detritus tank. We'll talk about it afterwards. First we'll discuss the other process. Okay. Then there is your skimming tank. The skimming tank, what is the use of this? As the name suggests, skimming. Where else you have studied this word skimming? Skimming of milk, skimming of cream from the milk. Yes, sir. Okay. So Many why this factories. skimming tank is used? Because wastewater, it always consists mostly what? Oils, grease, okay, soap bubbles or soap water present in it, detergents and all. So all these oily and greasy products, they are removed with the help of this skimming tank. Okay. The skimming tank is mostly yeah, there is one more thing. It is always employed before primary sedimentation tank. अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? This oil and grease present in water, it will what? It will do what? It will hamper the growth of microorganism. Okay. और अगर microorganisms की growth hamper हुई तो क्या होगा? It will affect or reduce the efficiency of biological treatment. See this, why I always repeat this entire thing, the connection between microorganisms and organic matter and the decomposition process, because this is the main what do you say,
दिस इज द कोर ऑफ दिस एंटायर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों का इंटर रिलेशन नहीं समझ में आएगा, यस एग्जैक्टली, तो अगर ये इंटर रिलेशन नहीं समझ आएगा तो तुम कोई प्रोसेस ठीक से समझ ही नहीं पाओगे। और अगर ये इंटर रिलेशन समझ आ गया तो इजीली यू कैन डिफाइन एनी प्रोसेस, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एनी प्रोसेस इन दिस। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब एरोबिक एनारोबिक में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में बहुत इजी लगता है, किसी नॉर्मल किसी से भी पूछोगे तो हाँ ट्रीटमेंट करना है, लेकिन हाउ यू विल बी डेजिग्नेटिंग कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू प्रोवाइड, देन व्हाट प्रोसेसेस शुड you should use over there, then up to what degree treatment you should be carrying out, okay, and how you should enable that, you should ensure that the treatment process carried out is efficient। तो कैसे इंश्योर करोगे जब तक तुम्हें इंटर रिलेशन मैकेनिज्म नहीं पता है पूरा, तब तक तुम इंश्योर कर ही नहीं सकते हो। Okay, so the skimming tank is clear. Yes, Okay, sir. then comes the sedimentation. Just a minute, I'll show you these images. I guess I was having somewhere. Yeah. See, this preliminary treatment or primary treatment. Here is an image of grit chamber. You all can see this image, na? Is it visible to all? Yes, sir. See, so here there are two different grit chambers provided. First one is aerated grit chambers, which does what? What is the mechanism in this? Diffused air keeps the organic solids in suspension as the grit settle. Okay, so what is this? इसमें हम लोग जैसे ही तुम्हारा वेस्ट वाटर पास कराएंगे, यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूज्ड एयर डिफ्यूजन विल बी डन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, from this point air diffusion will be done, and this diffusion of air will do what? It will keep the organic solids in suspension. Till then what will be done? जो inorganic particles होंगे तुम्हारे, they are mostly what? Mostly heavier as compared to the organic particle. So meanwhile inorganic particles will settle down. That is the grit. Okay, see over here, the grit is settling down and it is being removed from the bottommost layer. And see how the structure, how beautifully the structure has been constructed. Okay, why this has been constructed like this? So as to enable the auto removal of the grit, or you can say exit of the grit from this particular point. Okay, the second diagram shows the vertex type grit chambers. Okay, this vertex is why this it is known as vertex type, because instead of allowing the grit to settle like this in the first case, here what we do is we this thing induce a vortex in this particular tank. And what happens while inducing this vortex, that the organic matter will be in diffused form. Okay, and the grit will do what? Grit being heavier, it will stick due to this vortex flow, it will stick to the side walls, and then it will move to the slowly it will move to the bottom of the this thing detritus tank. So you all know how the vortex works, right? So what is the direction of movement of vortex? If you leave any particle in a vortex, what will happen? It will be directly going to the what? To the eye of the vortex at the bottom. Okay, Downwards. yes. So see, you all have watched cartoons, and in cartoons there is n number of, there are example of vortex. Take people dragging away with the vortex, Yes, sir. things dropping in the vortex. The best example I can give you right now is that only. Okay, so this is how the vortex flow is adopted in vortex type grid chamber. Okay, so I hope now grid chambers are clear to you, how they are provided and how they are used in the treatment process. Is it clear now? Yes or no? It is clear. Yes, sir. Okay. See, then we talked about commutators. So commutators are what? See over here. This is your rotating or cutting screen. Okay, so in commutators what is happening? The cutting action is taking place. So what we do is, यहाँ से तुम्हारा induce हुआ क्या? यहाँ से वेस्ट वाटर इंड्यूस कराया तुमने, एंड इट इज एक्सपोज टू दिस cutting screen. So this cutting screen will
do what? It will cut the organic impurities, large inorganic impurities, and it will further pass the water from here. Okay, so this is how our communities work. See, these are your sedimentation tank. Okay, we haven't moved till sedimentation tank now. Just a minute. Yeah. See, you all can see this new image. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what you can see? Sewage treatment plant. You can see this particular image, right? Yes, sir. See, very beautifully over here it is depicted that the first one, this particular section is your primary treatment. Okay, now how this primary treatment is carried out? Liquid stream comes from here, then influent pump station will pump the water in to the bar screens. This bar screens and grit separations will be done from grit removal tanks. Okay, and it will be taken. This trash will be removed. Then in this is your preliminary treatment. Then primary treatment में क्या होगा? Primary sedimentation tank and fine screens will be installed, जिससे तुम्हारा क्या होगा? Sludge will be generated and solids and water both will be generated, and this will do done what? This will be carried to the sludge digestion tank. Okay, then again the second thing, that is secondary process, that is membrane treatment. In some books it will be written as membrane treatment. Okay, so this, what is this membrane treatment? This is the same thing जो contacts हम करा रहे थे microorganisms और तुम्हारा this thing organic matter and microorganisms का. ठीक है, so over here then lastly disinfection. We don't carry out disinfection in sewage treatment. This is not appropriate. Okay, we don't carry out disinfection. Only rarest of the rare cases we can carry out disinfection, or else there's no point of disinfecting the sewage. I don't know why it has been put up over here. Okay, so just leave this. Okay, so this is basically a broad outline diagram of how the this thing treatment process is carried out. Okay, and then how the sludge is dealt with. See, this lower portion, this image deals with how the sludge is dealt with. तो जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसेस से स्लज निकला, वो तुमने क्या किया? तुमने कैरी कराया स्लज थिकनर में, और स्लज थिकनर ऐड करके तुमने क्या किया? स्लज डाइजेस्टर्स में स्टोर कर लिया. देन आफ्टर द स्लज इज डाइजेस्टेड, देन व्हाट इज डन? डी वाटरिंग कर दी. डी वाटरिंग के बाद जो पानी निकला, पानी को तुमने अलग डिस्पोज कर दिया, और जो सॉलिड वेस्ट निकल के आया, दैट इज जो फाइनली स्लज तुम्हारी निकली, उसको तुम स्लज ड्राइंग बेड्स या फिर जो लैंड डिस्पोजल हमने पढ़ा था, वो उन टेक्निक्स में से कोई भी एक टेक्निक यूज करके, सुटेबल टेक्निक, और डिस्पोज कर देते हैं. सी दिस these are how the screens look like. ठीक, these are what? These are the screens which are used for screening process in wastewater treatment plant. Okay, and this is, see over here, this is your the inclination which is provided. Okay, यहाँ पर ये सीधा दिख रहा है तुम्हें, but this is always placed at a particular angle. Okay, these are again clarifiers or primary sedimentation tanks. See over here, these are image of clarifiers. And see again grit chamber. Okay, that one was a detailed diagram. This is just an outline diagram of how the grit chamber works. See, yeah, this is what I wanted to show you guys. Okay, see, so I was talking, see, in the previous slide we talked about the contact which we have bring between the this thing microorganisms and your this thing organic matter. Okay, so how we do that? There are various methods. दो mechanism दो हैं तुम्हारे पास, लेकिन methods अलग अलग हैं. ठीक है, for example, see this one over here. This is a example of trickling filters. Trickling filters में क्या हो रहा है? ये जो तुम्हारा बीच में पाइप्स, ये क्रॉस में जो पाइप्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा वेस्ट वाटर सारा फ्लो कराया जाता है. ठीक है, एंड दिस कीप्स ऑन रोटेटिंग कंटिन्यूसली.
this ये जो प्लस साइन बन रहा है पाइप्स का, दिस एंटायर असेंबली दिस इट कीप्स ऑन रोटेटिंग कंटिन्यूसली. तो ये नीचे क्या है, नीचे दीज आर योर व्हाट, दिस इज योर biological beds. ठीक, why this is known as biological beds? Because see this, all of you can see this image na. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. so what happens over here is जैसा जैसा तुम्हारा सीवेज इस पर गिरता जाएगा, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, सीवेज में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो उस पर डिपॉजिट करते जाएंगे इन एग्रीगेट्स पे, और आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, जैसे तुम्हारा सेडिमेंट इसमें होता था योर रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर में जो होता था तुम्हारा, ठीक, स्मूथ डेक लेयर उसमें बनता था, याद है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा लेयर बनेगा, लेकिन again a slime will be generated and all the microorganisms will start growing on this particular layer. Okay, and since this is even exposed to air and even exposed to sunlight, then the growth rate will be too high. Okay, and what will happen then, continuously ये जो सीवेज है ये तुम्हारा स्प्रिंकलर फॉर्म में इसके ऊपर स्प्रिंकल हो रहा है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे हम लोग कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं. प्लस एक और एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि दिस इज अ एरोबिक प्रोसेस, एंड अगेन एरेशन इज बीइंग फर्दर डन, क्योंकि हम लोग स्प्रिंकल करा रहे हैं पानी. तो जो ये था तुम्हारा एरेशन प्रोसेस में तुम्हारा जो तुमने पढ़े थे अलग अलग प्रोसेस, स्प्रे नोजल देन कैस्केड एरेटर, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे. तो इनमें क्या है, इनमें क्या होता है तुम्हारा एरेशन होता है. तो एक तरीके से हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, एरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और लेयर्स का कांटेक्ट भी करा रहे हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कांटेक्ट भी करा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर से. Okay, similarly rotating biological we'll study all these in detail further. Just as of now, just I wanted to show you all this so that you would be better able to connect the. Okay, this is a rotating biological contactors or RBCs shorts में हम लोग जब बोलते हैं. So what is this particular thing? This is also the same thing. जो ये टैंक है इसमें तुम्हारा क्या है पूरा, what is it, this is your waste water. और ये जो RBCs की जो ये belts हैं या you can say RBCs की जो body है, इस पर तुम्हारा क्या है, growth of microorganisms is all over on these, the layers are there in all over all these layers of RBCs. This RBC keeps on rotating continuously और सारा पानी इस पे expose होता रहता है, contact में आता रहता है. तो this is how we deal with all these. Then this is oxidation pond, then there are certain sludge digestion tanks and all. We'll study all these in the coming topics and coming units. As of now, I wanted to show you all this because now you would be able to better relate all this. Visualize. Yes, sir. Where were we? Yeah. Okay, so now let's talk about the sedimentation process. So the very first thing that comes to your mind in sedimentation this thing process is, what is this, what is the most important thing in sedimentation? The two velocities. The first is settling velocity, second one is flow velocity. Flow velocity हमेशा कम होनी चाहिए and we should ensure that settling velocity should be fast. सेटलिंग वेलोसिटी को तुम ऑल्टर नहीं कर सकते हो. कैसे कर सकते हो सेटलिंग वेलोसिटी को ऑल्टर? तुम पार्टिकल का साइज बढ़ा सकते हो. पार्टिकल का साइज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोएगुलेशन एंड फ्लोक्युलेशन. ठीक, तो सीवेज के केस में कोएगुलेंट्स ऐड करना is a very big thing, big deal. Why? Because enormous amount of water is being has to be treated. तो जब रिक्वायर्ड होता है हम लोग सिर्फ तभी कोएगुलेशन और फ्लोक्युलेशन करते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं. ठीक, जब रिक्वायर्ड है लेकिन तब हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करते हैं. बट whenever there is a requirement, we go for coagulation aided flocculation. Okay, so settling in this particular sedimentation, it occurs in 4 different types of settling. Okay, so the first one is discrete settling, जिसको हम लोग type 1 settling बोलते हैं. I think this has been covered in your thing. You have already studied this in raw water also. Am I right? Correct me if I'm wrong. Yes, sir. You have already studied over there. Yes, So sir. first one is your type 1 settling. We'll quickly cover this.
First is your which one? Zone 1 or type 1 settling, that is discrete settling. Okay, so this type of settling, it takes place in the grid chamber itself. Discrete settling is what? अगर individually particles तुम्हारे settle कर जाते हैं due to their original shape and size. Okay, and very clearly Stokes law is applicable in this particular type of settling. The second one is flocculent settling. Flocculent settling का मतलब, what do you mean by flocculent settling? This means formations of flocks will be there. This one. Okay, flocks are formed. Flocks कैसे बनते हैं? Flocks will be formed by the addition of coagulant या फिर self, अगर flocculation हो गया तो that is also one thing. Self flocculation कैसे होता है? Self flocculation mostly तब होता है जब concentration of particle in water is more and concentration of particles in water is less and the heavier particles they will be attaching themselves to the smaller particles, or the particles which are present over there, either of them will be having certain attractive properties, ठीक है, या binding properties. उस केस में natural flocculation बहुत easily होता है. Then third one is zone or hindered settling. This type of settling is observed when concentration of particle in water is in medium range, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, right? तो what happens in this type of settling? The particle settles in the form of zone. They form a zone and they settle in the form of zone. How they settle in the form of zone? Because they will be exhibiting a relative, constant relative position. For example, see, consider this image only. Okay. This is Vs0, Vs1, Vs2, Vs3. Okay, these are all particles. This Vs is your settling velocity, nothing but settling velocities of the particle. Now, if this depends upon mainly the type of particles. अगर type of जो concentration of particles है वो medium range में है, ठीक, और बहुत ज़्यादा नहीं है, और mostly uniformity है particles में, तो क्या होगा? Let's say वो सारे particles जिनका डाया आपका 10 mm है, ठीक है, तो वो क्या होगा? क्योंकि उनका डाया सेम है तो मास भी ऑलमोस्ट सेम होगा, तो सेटलिंग उसकी वेलोसिटी जो होगी ऑलमोस्ट सेम होगी. देन देयर विल बी पार्टिकल्स विद 0.5 mm और 0.1 mm, ठीक है, देन 1 mm 2 mm के पार्टिकल्स होंगे. तो बेसिकली व्हाट, all the particles, all the similar particles will adopt a similar velocity and they will be, क्योंकि बाकी भी similar velocity से जा रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे